अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सफदर ईसा। आज फिज़िक्स के एक और टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम is stated as moment inertia of any rigid body is equal to moment inertia passing through center of mass of body plus product of mass and square of diameter of two parallel axes। ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इसे ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। एक कलर आई का पॉइंट पी एक्स एक्सिस हो गया, डायमीटर। The x coordinate of center of mass C is the x coordinate of center of mass C is x m is equal to sigma mi xi or sigma mi। इसी तरह the y coordinate of center of mass C is y c is equal to sigma m y I over sigma m I। The moment inertia passing through center of mass C is ICM equal to sigma m I r I square। First equation, the moment inertia passing through point P, the inertia passing through P is I is equal to sigma m I r I square। ये इक्वेशन 2 हो गई। अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइन ऑन ट्राइंगल, r I square is equal to r I capital square plus d square minus 2d r I cos theta, where r I cos theta is equal to xi and r I square is equal to r I square plus d square minus 2d xi। ये हो गया। put in equation 2, equation 2 I is equal to sigma m I r I square plus d square minus 2d x I। Next I is equal to
m I r I square plus d square sigma m I minus 2d m I x I. At the center of mass xcm, m I x I over sigma m I is equal to 0 and sigma m I x I is equal to 0. So I is equal to sigma m I r I square plus d square sigma m I minus 0. Put in from equation 1. ICM is equal to m I r I square and I is equal to ICM plus md square. Hence parallel axis theorem is proved. Hence